Hello guys, welcome back to a new video. My name is Jyoti, your YouTube friend. Take a moment to subscribe. So let's get started with today's video. Today I'm going to be reviewing Plume sponges. I have saw this on online internet everywhere. People are talking about this, and then I thought it will be a nice opportunity to purchase this as they were told to be microfibers. I was very interested to see how they perform. I have ordered my Plume sponges few days before, and it was a prepaid order due to the national lockdown that is going on in India. It came after few days. It took me 2 to 3 days. I've ordered 2 sponges as they were in 30% off by the website, and then extra additional 10% off when you two of them together. तो इसलिए मैंने दोनों ही स्पंजेस मंगवा लिया था. एंड देन आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड अबाउट दिस ब्लू. मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था. इट हैज सच अ नाइस शेप. सो आई हैव यूज्ड फ्यू ब्यूटी ब्लेंडर्स हु हैव दिस सेम शेप, और ये शेप मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है. लाइक आप अपने इनर कॉर्नर्स में अच्छे से जा. चलिए देख लेते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे परफॉर्म करते हैं. इसके लिए मैंने एक कटोरी में पानी लिया. इसको डैम्प करते हैं इस ब्यूटी ब्लेंडर को. देखते हैं ये कितना साइज में एक्सपैंड होता है, ये कैसे अप्लाई होता है. ठीक है, डैम्प मतलब आपको इसको पानी में भिगाना है, फिर इसके सारे पानी निचोड़ के रखना है. सो ओह माय गॉड, दिस इज really big. So I will apply some primer जिससे कि मेरा फाउंडेशन अच्छे से स्टिक हो जाए. Apply the primer. So here we go. This is definitely very soft and nice. देखते हैं ये कैसे अप्लाई करता है मेरा सारा फाउंडेशन. We are just gonna see what is the result. It is definitely building my foundation so well on the skin. It is looking really natural. Usually मेरे फाउंडेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ब्लेंड करते वक्त. मुझे 5-6 मिनट से ब्लेंड ही करना पड़ता है, लेकिन ये अच्छे से ब्लेंड कर रहा है. जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुका है. अभी मैं अपना कंसीलर लगाऊं. कंसीलर मैं बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है ये अच्छी तरीके से ब्लेंड करता है. इसको मैं अपने यूजुअल जगह पे जहाँ पर मुझे द पिगमेंटेशन है और दाग है, मैं वहीं पे अप्लाई करूँगी. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. मेरा बेस अभी बहुत अच्छा लग रहा है. अभी हम लगाएंगे अपना ब्लश. ब्लश होता है लिक्विड ब्लश. उसके लिए मैं लेती हूँ मिस के शेड नंबर 64. सो इसको अगर आप मेरी तरीके से मेकअप करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली यूज दिस. दिस इज रियली हेल्पफुल. और मुझे बहुत ही आई एम अ ब्लश पर्सन. मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ब्लश लगाना, इसलिए मैं 2 लेयर्स में ब्लश को अप्लाई कर लेती हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बहुत ज़्यादा रेड लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में बहुत अच्छे से हम ब्लेंड कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर और भी चीज़ें आना बाकी हैं. मैं अपना कंट्रोल लगाऊंगी और अपना
फेस को पाउडर करेंगे. पाउडर के लिए मैं ले रही हूँ शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर. नाउ आई एम गोइंग टू क्विकली सेट माय अंडर आईज को मैं हल्के से सेट करूँगी. आई गेट रियली ऑयली ड्यूरिंग द समर. मैं हर जगह पर पाउडर लगाऊंगी जस्ट टू टोन डाउन द ब्लश. एज यू कैन सी इस साइड में बहुत ज़्यादा शाइनी लग रहा है एंड यू कैन सी द ब्लश वेरी prominently, and over this side it looks very flushed and natural. Also हमारा contour भी ठीक से दिख रहा है. So what we are going to do, we are going to first set our eyes with the powder, or this will help you to not sweat that much. So this is how you can always create your perfect base using a beauty blender. This beauty blender is really of good quality. I have heard about this really good things about this beauty blender, and it is really good. So it's a multitasking product. You can use this for all the steps. Complete rest of my makeup and then I will come back. I have quickly done my makeup. So all the details of my makeup are in the description box. Please check out, guys. And also I have used my favorite moisturizer underneath this makeup, and as you can see my foundation looks really nice. So don't forget to see my favorite creams video. Let's get into the pros and cons of this makeup sponge. Pros: it is very soft as you can see. You can use it in so many ways, different ways. It is very soft. It blends your product seamlessly. I did my product in front of you guys. In a beauty blender you need a lot of product and it absorbs more, but with this product it absorbs very less amount of product. It gives you very airbrush kind of a finish, which you can only get with brush. If you are a fan of a beauty blender, then you should give it a try. And then let's move on to the cons. There are only two cons. That is, it is currently available on their website only. I have checked Amazon, and on Amazon it is available, but it is out of stock. So if you want to purchase from Amazon, you have to keep on track that when it is on offer. And the second con we have is they are very expensive for a makeup sponge. So I have used pack makeup sponges which comes two for rupees 745 something. Sponge, the single one retails for rupees 850 per makeup sponge, which is very expensive. I have currently got it on 30% discount, and I have bought two of them, so I got additional 10% discount, which came around 500 something. So I had to pay a total of 1000 rupees for both of the sponges on the pocket. So if you are planning to invest on really good makeup sponges, then you definitely should try the cheaper options out there. So that's up to you. This was my review for this product, and thank you so much for keeping up with us. So glad to have you guys. Thank you so much for watching this video. I'll see you in my next video. Bye.